प्रस्तुत किया है। महोदय, आप और सभी यहाँ पर उपस्थित सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब तक 200 केसेस ऐसे हुए हैं बच्चों के जहाँ पर डिसरप्शन हुआ है, मतलब जिन माता पिता ने उनको अडॉप्ट किया उन्होंने वापस स्टेट को लौटाया है, और ये सभी बच्चे अब CCIs में वर्तमान हैं। दोबारा पुनः इनके लीगली अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय, ये समझते हुए कि पहले सिस्टम में कई लोग बच्चे अडॉप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पॉक्सो का केस हो, अपितु उनमें ये भावना जागृत नहीं हो पाई कि बच्चे की देखभाल करें, तो वो डिसरप्ट करके या डिसॉल्व करके उस अडॉप्शन प्रोसेस को निष्क्रिय कर देते थे, बच्चा वापस करते थे। वर्तमान का जो नया रेगुलेशन है महोदय, उसके अंतर्गत ऐसे पैप्स को दोबारा कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये हमने पहला एक रेगुलेशन स्थापित किया। दूसरा महोदय, NGO से अब एक ज़माना था जब लोग NGO पे निर्भर करते थे प्रशासनिक कार्य करने के लिए। हमारा ये मानना है महोदय इस विभाग के माध्यम से कि दायित्व का निर्वहन जो प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी का है उसका निर्वहन वही करें, वो किसी NGO को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना देखें। इसलिए महोदय नए रेगुलेशन के अंतर्गत हमने DM के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, DM के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। और CCIs में महोदय जितने भी CCIs रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने सतत वर्ष 2019 से लेकर अब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डीरजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे CCIs देश में बंद हुए हैं। और साथ ही महोदय अब जो नया रेगुलेशन आया है उसके अंतर्गत पहले ये माना जाता था कि अगर कोई NGO प्रस्ताव दे कि मुझे CCI खोलना है, वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने टाइटन किया है रेगुलेशन को। अब जब तक जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे एप्लीकेशन की तफ्तीश ना कर ले, उस जो बनाना चाहते हैं CCI, उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो, तब तक परमिशन CCI खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती। धन्यवाद। मौसम नूर जी। To you, I would like to ask the Honorable Minister, what is the average waiting period of adoption in the last 5 years? What are the steps being taken by the government to reduce the same? Thank you. I'd like to tell the honourable member that this House has been witness to many conversations, debate, deliberations and discussions wherein the average time taken to adopt a child through the court processes was so lengthy that a minimum of 2 years was needed by adoptive parents in terms of waiting. This is exactly, sir, the reason why we proposed the amendment. Many cases it took up to 3.5 years. And sir, as I have highlighted in my previous answer, on the 23rd of September this year, we notified the new regulations, sir. There were close to 900 cases pending in states, in our high courts. And after the states acted on the new resolution, sir, over 580 children have already been adopted. Including, sir, I would like to here highlight, there are children who are in the category of hard to place. They are older children who have never been adopted before. And such children now, so in a 7-day procedure technologically, are made available to even our NRI diaspora or OCI card holders, so that these children find families within our own socio-cultural milieu. Otherwise, such children were available for foreign adoption, sir. Just in a limit of 7 days, sir, 42 such children found placement with the Indian diaspora and resident Indians, sir. A child now, sir, does not have to wait. The adoptive parent may be, but I am happy to report, sir, that children will not have to wait. If in our country we have more and more parents who want to adopt, that is a healthy sign of a society which is compassionate. But I can assure you, sir, children do not have to wait. Procedurally, sir, state governments have assured us that through the DMs and the child welfare committees, the protection of the interest of the child has been made foremost. Thank you. Srimati Seema Dwivedi. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जो माता पिता 3 साल में बच्चों को गोद लिए हैं, उनमें बच्चों की संख्या अगर कम है
तो बच्चियों को भी ज़्यादा संख्या में माता पिता गोद लें, क्या इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए, और जो माता पिता बच्चियों को गोद लेते हैं ऐसे लोगों को क्या अलग से सरकार कुछ सुविधा देने का प्रयास करेगी? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूँ कि अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे देश में साल 2019-20 में एक तरफ 1400 लड़कों का अडॉप्शन हुआ, दूसरी तरफ 1938 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। हमारे देश में साल 2020-21 में 1200 लड़कों का अडॉप्शन हुआ और 1856 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। और महोदय 21-22 में 1293 लड़कों का अडॉप्शन हुआ और 1690 से ज़्यादा बेटियों का अडॉप्शन हुआ। तो वाकई में अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा मान के ही अडॉप्ट किया है। धन्यवाद। नाउ सप्लीमेंट्रीज ऑन क्वेश्चन नंबर 79. माननीय तिरुचि शिवाजी इज नॉट देयर, सो डॉक्टर यमी याग्निक. Supplementary on question number 79. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have gone through the reply given by the Honorable Minister. If you, the Minister kindly refers to all the authorities that are involved, sir. Child Welfare Committee, the Central Adoption Resource Authority, then there's a Juvenile Justice Board and an Act, and the Juvenile Justice Homes, then the District Child Protection Unit, OCI, CMO, there are so many authorities on one side. There might have been adoptions of the girl child and the boy child, as you mentioned, but the number which you have given is much less. The data shows a lot of orphan children in orphanages. I just want to ask you, do you have any plan to make some kind of an arrangement for these children for counseling? They are in waiting, they are not commodities. मेरा टर्न कब आएगा, मुझे कौन ले जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? This is an important issue rather than talking about all these other things. Have we thought about this future or the sensitiveness of the children's minds in this particular issue? Thank you. I would like to very humbly, through you, sir, object to the fact that there is a presumption by the honourable member that the numbers that have been professed in this house are a part of an administrative imagination. I, sir, recognize the authority and the dignity of the House, and so humbly through you submit, sir. All the numbers professed, and including the numbers that have been given in written responses to this House, are accurate in collaboration with constitutional and administrative authorities across the country. Hence, to subject these numbers that have been professed to some kind of an illegality, sir, is a great disrespect to this House and efforts of government at the centre and in the state, sir. So, insofar as this, again, proclamation that why have I written in this written response, who are the various administrative branches of government, including district authorities, who are liable or authorized or responsible to act in the interest of the child, sir. This House demands that kind of a disclosure in an answer, and hence that disclosure was given so that members of parliament, when they deem fit, know in the administrative hierarchy in the country who could they approach, in fact, if a child is in need of help. Sir, again the presumption that nobody in this government must have thought about the mental health needs of children, especially in childcare institutions, or for that matter, children in waiting, is again an anomaly. Because I have in this very House, sir, communicated earlier in one of my earlier engagements that in collaboration with NIMHANS, under the aegis of Ministry of Health, especially during COVID, the Ministry of Women and Child Development for children, particularly also in distress, in need, and children in CCIs, have received adequate counselling support through NIMHANS Samvad project. So over 1 lakh caregivers also were a part of it. Through the new regulations, sir, not only is mental health support and counselling given to children, but also adoptive parents. And not only pre-adoption, sir, but also post-adoption. I wish these facts which are available in public domain